So first is the physical properties of hydrocarbons. Take any hydrocarbon, methane, and we are doing saturated hydrocarbon. So let us take the smallest hydrocarbon. Saturated is possible for 1 carbon, and saturated minimum carbon should be 2, and so on. This having sp3 hybridization, all the 4 bonds are sigma bonds. That's why we are saying saturated. CH bond 2.5 के आसपास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. That's what the CH bond is. Slight polar, but the molecule as a whole is non-polar. This is with sp3 hybridization with tetrahedral geometry. Bond dipole is from H to C. So hybrid orbital 4, atomic orbital 4, lone pair 0, dipole moment 0. So dipole moment 0 बता रहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए ये कोई टेट्राहेड्रल है, जिसकी बात हम पिछली क्लास में भी कर रहे थे. अब जब ये नॉन पोलर है, हमने कहा कि जहां कोई फोर्सेस नहीं है वहां एक ही फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ मोलर मास, दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया, एंड दैट फोर्स ऑल मॉलिक्यूल पोजेस. अगर पोलर भी है तब भी उसमें वो फोर्स है, बट सामने नहीं दिख रही है, बिकॉज अदर फोर्सेस दे डोमिनेट ओवर वॉन डर वॉल फोर्स. So I should say they having the force which is van der Waals force, and van der Waals force depends upon surface area. So I should say more surface area, more van der Waals force, so more boiling point. We having normal pentane. Anyone who is written normal having only 2 types of carbons, that is primary and secondary. So if we having isopentane, the surface area will decrease. Then we having neopentane. So as the branching increases, surface area decreases. So I should say straight chain hydrocarbon will have higher boiling point than the branched chain. So if it is 1, this is 2, and this is 3, the decreasing order of boiling point will be 1 greater than 2 greater than 3.
which is again the decreasing order of van der Waals force. As we said, the van der Waals force depends upon surface area. The lower hydrocarbons having low surface area, so weak interaction, they are gases. The middle hydrocarbon having little more surface area, more stronger van der Waals force, they are liquids. The higher hydrocarbons having larger surface area, very strong van der Waals force, and they are solids. So as the molar mass will increase, the van der Waals force will increase. So CH4 से ज़्यादा strong van der Waals force C2H6 में है, उससे ज़्यादा जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन बढ़ते गए, कार्बन और हाइड्रोजन, वैसे सरफेस एरिया बढ़ता गया और वैसे van der Waals फोर्स बढ़ती गई. van der Waals फोर्स जो बहुत हाई हाइड्रोकार्बन्स हैं, they are solids, and in those solids, in case of solids, we don't talk about boiling point, we talk about melting point. And when it is melting point, that is characteristic feature of solids, and when it is solid, solids characteristic feature is symmetry, and symmetry is better when the hydrocarbon will have even number of carbons. When it will have even number of carbon, the first and last carbon will be alternate to each other, and that effect is called alternation effect or oscillation effect. Because first carbon is alternate to the last carbon, this clearly indicates that this would have been with even number of carbons. If with this and the last carbon is on the same side, that means this having odd number of carbon. The one with even number will have more symmetry than the one with odd number, and hence the even will have melting point greater than the adjacent member with odd number of carbon. वो उससे छोटा हो, adjacent member वो उससे बड़ा हो. What I mean to say is, having ICOS is C20. C20 is not only greater than C19 but greater than C21. मैंने कहा adjacent member. So I should say C22 will be greater than C20 but less than 24, even greater than 23. So the one with even number of carbon will have melting point greater than the one with odd number of carbon, and this is because of oscillation or alternation effect. And this oscillation and alternation effect is also true for the carboxylic acids, because they also having the main force as van der Waals force. तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हर जगह van der Waals फोर्स ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ इतनी हाई पोलैरिटी नहीं होती है. सो दीज हाइड्रोकार्बन्स दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज like dissolve like. It means they will be soluble in the organic solvent CCl4 and benzene. So after doing these physical properties, we have seen here that C20 will be greater than C19. Yes or no? जैसे जैसे आप हायर हाइड्रोकार्बन्स की तरफ जाओगे, who will have more density, solid, liquid or gas? Solid. It means with increase in the hydrocarbon chain, the molar mass is increasing. So it is mass per unit volume which is also increasing, and hence this is not only the increasing order of molar mass but increasing order of density also. Is it okay or not?
So after doing this physical properties, we are into the method of preparation of hydrocarbons. The first method of preparation is hydrogenation. Hydrogenation is addition of hydrogen, because hydrogen will be added to the unsaturated hydrocarbon only. Am I right? So we should say addition of hydrogen to the unsaturated hydrocarbons in the presence of catalyst is called catalytic hydrogenation, and that addition of hydrogen is also called a reduction. But it is called catalytic hydrogenation. There are two things. Try to distinguish. One is hydrogenation and one is hydrogenolysis. There are two different things. Hydrogenation is addition reaction. आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो. Whereas you know lysozymes. So hydrogenolysis आगे हम करेंगे इस जब हाइड्रोजन किसी को तोड़ दे. तोड़ दे मतलब कोई चला जाए और कोई आ जाए. जिसको तोड़ा उसकी जगह हाइड्रोजन का आना इस hydrogenolysis. So hydrogenolysis is a substitution, whereas hydrogenation is add कर रहे हो आप, add कर रहे हो. And this hydrogenation can be for alkene, can be for alkyne. और ये हाइड्रोजनेशन ऐसी नहीं होती है. If you remember chemical kinetics, there you did that the gas that get adsorbed on the surface of metal. इसलिए वहां हमने कहा था कि जहां पर गैस सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्ब हो उसको कहते हैं ऑक्लूजन. दे आर थॉट टू बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. और ये जो कैटालिस्ट है, अगर आप ये कैटालिस्ट रेने निकल ले रहे हो, रेने निकल इज active nickel. Active nickel in what sense? So Rene nickel is nickel mixed with aluminium and NaOH. Yes, no? When it is mixed with aluminium and NaOH, this nickel get converted into finely divided powdered form. Powdered form. और याद करो केमिकल काइनेटिक्स. आपने कहा रेट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. More surface area. So if a metal will be converted into its powdered form, its catalytic activity will increase. And then this reaction can be done even at ordinary temperature and pressure. And this hydrogenation, which is nothing but addition of hydrogen, the nature of this reaction is addition reaction. और इससे क्या हुआ कि एक CnH2n को 2H मिले और वो CnH2n plus 2 बन गया. मतलब alkane बन गया. So unsaturated get converted into saturated. The same can be true with alkyne,
but this need more hydrogen for hydrogenation, and hence the final product will be saturated hydrocarbon. But if you do the same things, the same reaction with simple metal catalyst, that is nickel, platinum, palladium, that do not occur under ordinary condition, that need a temperature near 300 degrees Celsius, that is 523 to 573 Kelvin. And this transition, this transformation was reported by Sabatier and Sandens. So this is called Sabatier and Sandens reaction. तो इस रिएक्शन के फायदे क्या हुए? फायदा नंबर 1, आपने एल्केन प्रोड्यूस किए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एल्कीन और एल्काइन बाय हाइड्रोजनेशन. सो पहली एप्लीकेशन आई कि दिस इज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन. यस नो? दूसरी बात आई इन और हम अपने घर में जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज refined oil. That is a hydrocarbon. Refined oil is liquid. So that is having stronger forces, unsaturated hydrocarbon or saturated hydrocarbon. It is the saturated hydrocarbon having all the bonds, sigma bonds. इसलिए वहां किसी की एंट्री मुश्किल है. मैंने कहा था अनसैचुरेटेड का मतलब है कि आप 4 चपातियां चाहते थे पर चपाती 3 ही मिली, एक समोसा पकड़ा दिया गया. इसलिए क्या है कि वो रिफाइंड ऑयल इफ केप्ट एज इट इज फॉर लॉन्ग टाइम, किसी को याद ही नहीं रहा, 5 साल के बाद निकाला, डाला तो पता लगा कि उसमें स्मेल आ चुकी थी, बिकॉज दैट वाज अनसैचुरेटेड एंड दैट स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी. So rancidity is the foul smell which is in unsaturated hydrocarbon, that is refined oil. That's why हमारे टाइम में कंपनी होती थी डालडा, जो सॉलिड घी बनाती थी. सॉलिड इज स्ट्रॉन्गर फोर्सेस and that वनस्पति घी is saturated hydrocarbon. So to store this refined oil, this is being hydrogenated and converted into solid vanaspati ghee. So we should say this is a process which can be used for conversion of refined oil into vanaspati ghee. Yes or no? Refined oil into vanaspati ghee, because refined oil after keeping is at it is for long time, this produce rancidity, is foul smell. So दो काम हमारे ये कर रहा है. Next method of preparation of alkane is from Wilkinson's catalyst. Wilkinson catalyst is tris triphenyl phosphine rhodium 1 chloride. This is a homogeneous catalyst, and the characteristic feature of this homogeneous catalyst is
that this don't disturb any other unsaturated bond except that कार्बन कार्बन बॉन्ड. सो साइनाइड के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड है, बट इसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं रहना चाहिए. And we call it homogeneous catalysis if they all are in the same physical state. So similarly we having NO2 जिसमें NO bond जो है वो double bond होता है, and then we should say this is this, और इस पाई बॉन्ड में एडिशन हुई तो पाई बॉन्ड सिर्फ CH के बीच में चेंज हुआ और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया. दिस इज एस्टर. वी डू हैव C double bond O in ester also, but that is not being disturbed by Wilkinson's catalyst. So this is only and only affecting the carbon-carbon double bond. We having ketone here, जिसमें भी हाइड्रोजनेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, पर नहीं. दिस कैटालिस्ट, ऐसे कैटालिस्ट को कहते हैं that they are specific in their action. Specific का मतलब हुआ कि बस जो करना है वही करना है. दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ध्यान से सुन ले. एक आपने सुना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक सुना होगा सोडियम बोरो हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम है और हमने पढ़ा था कि लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. तो उसकी वैल्यू तो सोडियम से भी ज्यादा है, क्या देने की. इसका मतलब हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड. The one who is strong is never specific. It means Wilkinson catalyst is weak reducing agent. What we mean by specific and not specific? समझो कि कुश्ती हो रही थी और एक तगड़ा पहलवान ग्राउंड के बीच में जाकर बोलता है, पब्लिक को चैलेंज करता, ओपन कोई भी आया. That is the स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अब कोई बंदा बीच ग्राउंड में जाकर बोलता है कि ये जो बुजुर्ग आदमी हैं इनको भेजो, बाकी देखना कोई आ गया ना. का मतलब हुआ स्पेसिफिक एक्शन है, वीक है. बट हर रिड्यूसिंग एजेंट की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं. मैं अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी बात करूंगा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, मतलब इथीन को इथेन में कन्वर्ट नहीं कर सकता. मतलब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट रिडक्शन नहीं कर सकता. हां, उसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसके ऊपर काम कर सकता है, जैसे कि सामने की रिएक्शंस को कंप्लीट करें. एक और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है और इस ये भी स्पेसिफिक है, वीक है. नाम है ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरिडो हाइड्रिडो रूथीनियम 2 इज अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, जो ये कहता है यार अगर कहीं कोई डबल बॉन्ड टर्मिनल हो तो मेरे को बताना. समझ में आ गई बात? सामने जो क्वेश्चन दिया है ये आया हुआ है. दिस वाज द क्वेश्चन कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए. मैंने कहा कि ये वीक है, स्पेसिफिक है, इसलिए इसने सिर्फ और सिर्फ जो टर्मिनल बॉन्ड था उसको सैचुरेट कर दिया, बाकी वैसे के वैसे हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जहां तक इंडिविजुअली किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्जन करने की बात आएगी, मना कर देगा, हाथ खड़े हैं.
हां, उस हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ और है, कीटो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिनाइल है, तो कहता है कि भाई वो जो डबल बॉन्ड है वो हम सैचुरेट कर देंगे। ठीक हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ OH को किया तो इस केस में वो स्पेसिफिक हो गया, और आगे जाके हम देखेंगे कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन की रिडक्शन कर सकता है, पर ऐसे केस में नहीं कर सकता। कैसे में? sp2 sp2 sp2, that is when this keto group will present in conjugation, नहीं कर पाएगा। का मतलब हुआ कि यहां हमारे पास जो कीटो ग्रुप है वो वहीं का वहीं रहा, पर डबल बॉन्ड की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ने एल्केन बना दिया। This is one another method of preparation, and the next method of preparation is what we mean by Grignard reagent, how it is being synthesized and what are its applications. Grignard reagent is an organometallic compound having carbon metal bond and was discovered by Victor Grignard, who got Nobel Prize in the year 1912. And this Grignard reagent, it having wide application in organic chemistry, चाहे वो synthesis of alkane हो, चाहे वो सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल हो, चाहे वो सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जब एक बार हमने नाम ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका सिंथेसिस, सॉल्वेंट कौन है, क्यों है, और ये पूरी ऑर्गेनिक में क्या क्या करेगा, वो हम यही बात कर लेंगे कि इसके एक्शंस कैसे कैसे हैं। सो हमने क्या किया कि भाई कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, और अल्काइल हैलाइड में आपको पता होता है कि ये बताया है आपको कि जब sp3 के साथ हैलोजन होता है तो उस हैलोजन का सिर्फ -I इफेक्ट होता है, इसलिए उस अल्काइल हैलाइड को हम लेबाइल हैलोजन कहते हैं, और ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह होता है। अब आपने जब इसको ट्रीट किया तो क्या बना, आपने इसको ट्रीट किया तो क्या बना, आपने इसको ट्रीट किया तो क्या बना। You treated with magnesium metal। आपको बता दिया जाए, हमने पढ़ा है कि ये जो बॉन्ड है ये इधर हैलोजन -I के साथ +R शो करता है, एंड दिस एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको हम बोलते थे कि जब हैलोजन किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ होगा तभी उसका रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और तब वो CX बॉन्ड डबल हो जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए हम इस हैलोजन को अक्सर कहते आए कि ये इनर्ट है, और इसको कहते आए कि ये तो लेबाइल है। लेबाइल मतलब रिएक्टिव। क्लियर हो गया? जब ऐसा हुआ तो आपने इसको जो है वो मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया। मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल,
जिसके लिए कोई इनर्ट नहीं रह सकता। कुछ और होता तो ये CBr बॉन्ड ना टूटता, पर मैग्नीशियम इज अ मेटल, रिएक्टिव मेटल, और उस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कोई 1.2 के आसपास। इसलिए वो मैग्नीशियम यहां जहां इस कार्बन मेटल बॉन्ड को आराम से तोड़कर अपनी डायबैलेंसी पूरी करेगी, एक साइड Br है तो दूसरी साइड अल्काइल ग्रुप है। In this case also it is CH3CH2 is MgBr. So this is no doubt inert but not for any metal. इसलिए आगे जाके आप किसी haloarine, arine is benzene, when halogen is bonded to benzene is inert but not for any metal. It means this will be forming phenyl magnesium bromide. And these all they having one thing in common, and that common thing is that they all having carbon metal bond. We will be doing in inorganic chemistry coordination compounds. They are called organometallic compounds. And what is metal here is magnesium. So what is there is that this carbon is of electronegativity around 2.5. What does this mean? इसका मतलब साफ हो गया कि organometallic में carbon will get the negative charge and magnesium will get the positive charge. This is how the cleavage will occur. How the cleavage will occur. Now, very important, जिसका यहां बहुत यूज किया गया, क्योंकि उसको हम जनरल में पढ़ चुके हैं। जब हमने जनरल ऑर्गेनिक में पढ़ा तो सबसे वीकेस्ट एसिड था एल्केन, am I right? और उससे स्ट्रांग था अमोनिया, उससे स्ट्रांग था एल्काइन, उससे स्ट्रांग था अल्कोहल, उससे स्ट्रांग था वाटर, वाटर से स्ट्रांग था फिनोल, फिनोल से स्ट्रांग था कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें फॉर्मिक एसिड पहले, फिर उससे वीक बेंजोइक, बेंजोइक स्ट्रांग एसिटिक से, और सबसे टॉप में था सल्फोनिक एसिड। अब जो सबसे वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रांग हुआ, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना तो CH3Mg, तो CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है? CH4 का। और CH4 कैसा एसिड है? वीकेस्ट एसिड, सो द कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। का मतलब हुआ तुम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एसिटाइलिन भी डालोगे, ये उस एसिटाइलिन के H पॉजिटिव को ले लेगा, उस एसिटाइलिन को बोलेगा आप एसिड मैं बेस, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अब आप खुद सोचो कि जब ये एसिटाइलिन को बोल सकता है कि आप एसिड, तो सल्फोनिक एसिड के पास तो खुद ही जाएगा, महाराज आप एसिड हैं मैं तो बेस हूं। इसका मतलब हुआ कौन जितना जल्दी H पॉजिटिव देगा उतना फास्ट CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा, उतना फास्ट क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। पर अगर मैं कहूं तो CH3CH2 नेगेटिव is not is stronger conjugate base than CH3 negative, because this is its acid is CH3CH3, मतलब रिलीजिंग ग्रुप बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे कहना चाहिए कि अगर
मीथेन वीकेस्ट है तो इथेन तो उससे भी गया गुजरा है। इसका मतलब उसको H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना और फास्ट हो गया। का मतलब हुआ अगर हम पूरी ऑर्गेनिक के सारे एसिड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है वो अपना रिस्पेक्टिव एल्केन सबके साथ बनाएगी एंड सबसे फास्ट बनाएगी सल्फोनिक के साथ। तो अगर हमने इसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा जाता है तो अभी हम करने वाले हैं आगे कि क्या होना चाहिए, पर हम सबसे पहली बात करने वाले हैं कि जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो वहां हम सॉल्वेंट ईथर यूज करते हैं। तो जहां भी कहीं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जहां भी आपको रिएक्शन मिलेगी वहां आपको ईथर जरूर मिलेगा। इसका मतलब साफ हो गया कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेट अस से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के अंदर कौन है, मेटल आयन। जहां मेटल एक लुईस बेस होती है क्योंकि वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन दे देती है, मेटल आयंस आर लुईस एसिड्स एंड ईथर इज Lewis base. It means these ether, they are the solvents because they get coordinated with the Grignard reagent. जैसे हम कभी पढ़ते थे CuSO4.5H2O, that is water of hydration, that is water of crystallization. So we call that hydrate. So this is called etherate. इसलिए हम कभी भी मेटल को ड्राइंग में अल्कोहल यूज नहीं करते क्योंकि अल्कोहल भी लुईस बेस होता है। इसलिए वहां मैग्नीशियम और ईथर का बॉन्ड क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। डायरेक्शन इज फ्रॉम रिच टू डेफिशिएंस, सो दिस इज OR, यस नो। So this is the reason why this is being prepared in ether as it form etherate. अब जब ये बन गया, इथरेट बन गया, तो हमें ये पता लग गया कि सॉल्वेंट ईथर क्यों है। अब बात आई कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहली रिएक्शन इज वेयर Grignard reagent prove that all those who having active hydrogen, they are stronger acid than me. Then me और me के अंदर कौन है, CH3 नेगेटिव या R नेगेटिव। का मतलब हुआ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ ट्रीट किया, जिसको हम कहते हैं कि ये अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है एक्सेप्ट मिथेनॉल। अब जब आपने ऐसा किया तो ये CH3 क्या बन गया, नेगेटिव बोल रहा है, H पॉजिटिव दे दो, मैं हूं स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। So CH3 negative got converted into CH4 plus Mg Br OH, and this alkane is a gas. Yes, no? So this is
preparation of alkane from active hydrogen containing compound. The name of the reaction is Zary-Witnoff reaction. So complete these reactions now. This reaction is called Zary-Witnoff reaction. And this proves that all these are acids. All these are having active hydrogen. और इन सब में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी किसकी? एसिटिक एसिड की. नंबर लगे हुए हैं सामने. सबसे फास्टेस्ट इज विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड इज विथ फिनोल, थर्ड इज विथ वाटर, फोर्थ विथ अल्कोहल, फिफ्थ विथ एसिटाइलिन, सिक्स्थ विथ alkylamine. So I should say the reaction which will be fast is this reaction, because this occurring with the strongest acid of organic chemistry, जिसने उसको फटाफट से पर. So I should say here I'm just writing the major product. I'm getting here CH4, getting here CH3, CH3, getting here CH3, CH3, getting here propane, getting here propane, but little bit faster, getting here Grignard reagent with amide. Amide do have NH bond. Am I right? So it means they do have the active hydrogen. So if with the Grignard reagent having one carbon, we'll get the, and these are lower hydrocarbons, so all are gases. So this preparation of alkane from active hydrogen containing compound with Grignard reagent is called Zary-Witnoff reaction. Is it okay? This is the first application of Grignard reagent. Second application. Second application of Grignard reagent is preparation of alcohol. Preparation of alcohol from carbonyl compound. First carbonyl, the simplest carbonyl compound is formaldehyde. क्यों आपको जनरल में सब कुछ कराया जाता है? इसीलिए that nature of reaction of carbonyl compound is nucleophilic addition. बता दिया था क्योंकि जानने वाला कोई नहीं है. H नेगेटिव हाइड्रोजन का कॉन्जुगेट बेस है जो कभी एसिड था ही नहीं. So CH3
MgBr पूरी जनरल ऑर्गेनिक की एप्लीकेशन है और वो तुम्हें आती है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं भी नहीं है. CH3 negative, MgBr positive. We said nucleophilic addition का मतलब हुआ HCO negative, MgBr positive. This is CH3, this is H, this is H. Followed by its hydrolysis. Followed by its hydrolysis. Do the hydrolysis. When you will do the hydrolysis, this carbon is CH3 CH2OH plus Mg now is with electron negative OH and Br. So we are getting here the carbon to which OH is bonded is itself bonded to one carbon, means primary alcohol. It's primary alcohol. Now complete the reaction. Followed by hydrolysis. Complete the reaction of acetophenone with Grignard reagent. Followed by hydrolysis. So this will go here. This is the nucleophile. This will go here. This is the nucleophile. Although the reaction was difficult here because this is showing plus R effect, but the attacking nucleophile is very strong, and followed by hydrolysis. I am getting this. That is the carbon to which OH is bonded is itself bonded to two carbons, so is secondary alcohol. So whereas from formaldehyde we got primary alcohol, from acetaldehyde we got secondary alcohol. And from ketone, do the same mechanism. We are getting tertiary alcohol. So from formaldehyde we get primary, acetaldehyde we got it secondary, and from ketone we got it tertiary. Next application number 3. Third application is a reaction of Grignard reagent with the acid derivatives. जनरल ऑर्गेनिक का यही फायदा है कि हमें सब कुछ पता है. क्या पता है हमें? That nature of reaction of acid derivative is nucleophilic substitution reaction.
nucleophilic substitution. And we know CH3 negative is far better nucleophile than Cl negative. Cl negative का एसिड कौन है? कैसा एसिड है? कैसा कॉन्जुगेट बेस हुआ? वीक कॉन्जुगेट बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. कहता मैं जाने को तैयार हूं. And then do the reaction what we are getting here. That is CH3 substitution में पहले क्या होगा? दो फैक्टर अफेक्ट करते थे. वन इज जो ग्रुप सी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले अटैक होना है भाई न्यूक्लियोफाइल का, फिर किसी को जाना है. सब्स्टिट्यूशन तो तभी होगी जब कोई लिविंग ग्रुप होगा. इसका मतलब हुआ दिस विल गो हियर एंड O negative Mg Br पॉजिटिव. यस और नो? देखिए भाई, जब ऐसा हुआ तो Cl अभी यही था और उसके लिए कौन वहां धुरंधर आ गया? CH3 आ गया. उसे वो डर रहा है. अगर ऐसा ही रहा तो बस मेरा तो परमानेंट पत्ता साफ है, क्योंकि CH3 नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. इसलिए ऐसा हुआ और ऐसा हुआ. अ गुड लिविंग ग्रुप. Cl क्या चला गया? एज Cl नेगेटिव. बन गया ऐसा. एंड द प्रोडक्ट वी गॉट इट कौन? कीटोन. अब देखने वाली बात यहां होगी, अगर यहां ऐसा लिखा होगा तो आप यहीं रुक जाओगे. सुना? बिकॉज दिस Grignard reagent is very reactive. Not only react with more reactive acid halide. Why I'm saying acid halides are more reactive? Because Cl having minus I effect will make the carbon more deficient, so will allow the nucleophilic attack faster in comparison to ketone. पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो हर कुछ ही स्ट्रांग है, ना कि वो वहां अटैक करने को तैयार है, बल्कि वो बोला मैं तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा. अभी किया हमने. सो व्हेन दिस Grignard reagent will be written in excess, Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis gave tertiary alcohol. अभी मैकेनिज्म करके हटे हैं हम. It means the product is, final product is tertiary alcohol. Yes or no? पर ये तो हमने कौन सा एसिड डेरिवेटिव लिया था? Who among acid derivative is the fastest acylating agent? Who is most reactive towards nucleophilic substitution? It is the acid halide itself. You just check out your notes. The reason being is this is the only derivative where someone is present with minus I effect. Otherwise, if you take ester, you will get the one who is with plus R effect. You take acid anhydride, O having plus R effect. You take the last acid derivative, who that is? Acid amide. Acid amide, अगर आपकी याददाश्त ठीक है बेटा, तो हम अभी कर चुके हैं.
this was question again. Which one of the following acid derivative differ in its reaction with Grignard reagent? Answer is amide. Amide having active hydrogen, and because of this active hydrogen, this gives Zaryvatnov reaction. No other acid derivative having active hydrogen. It means it is the acid amide who differ in its reaction from the other acid derivatives with Grignard reagent. The only acid derivative who give alkane with Grignard reagent is acid amide, because it having active hydrogen. अब बाकियों की सबकी रिएक्शन सेम होंगी. मैं एक एस्टर का स्टेप या एनहाइड्राइड का स्टेप बता रहा हूं. ये बताइए कि एस्टर में और एनहाइड्राइड में जो लिविंग ग्रुप है, is it that weaker conjugate than R negative or stronger conjugate base than R negative? हमने क्या किया? This will go here, this will go here, this will become CS3 negative, MgBr positive. So this CS3 negative will attack here. जब इसने यहां अटैक किया, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या आरओ इससे अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है? अभी तक नहीं लगा पता. क्या आरओ का एसिड उससे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है? तो कॉन्जुगेट बेस वीक हुआ ना, गुड लिविंग ग्रुप हुआ. इट मींस वी आर अगेन गेटिंग एसीटोन हियर. Yes, no? With Grignard reagent will form tertiary alcohol. You just see here, जब ये यहां जाएगा, this CS3 will attack here. Is it not that CS3CO negative is better living group than CS3 negative? It means what you will be getting here is CH3COO negative MgBr, and you will be getting acetone. Again, with excess of Grignard reagent, you will be getting tertiary alcohol. So thank you very much. Have a nice time. यहां तक हमने कर दिया, इससे आगे अगले क्लास में करेंगे.